ओम नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। आज आप दिव्य विष्णु भुजंग उपयात स्तोत्र श्रवण करने वाले हैं। श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा के लिए यह स्तोत्र विशेष माना जाता है। इस स्तोत्र के श्रवण करने से और पाठन करने से दारिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है, धन की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास आपके यहाँ से खत्म हो जाता है। कहा जाए कि हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर हो जाती है। भगवान श्री हरि की कृपा तो मिलती ही मिलती है, साथ में समस्त प्रकार की ग्रह बाधा भी शांत होती है। रोग दोष और कष्ट संकट विघ्न विपत्ति हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। चलिए भगवान विष्णु का यह दिव्य स्तोत्र विष्णु भुजंगपयात श्रवण करते हैं, जो कि हमने 7 बार लगातार श्रवण के लिए उपलब्ध कराया है। भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करिए और इस स्तोत्र को श्रवण करिए। भगवान श्री हरि आपके समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करेंगे। सुनते रहिए। ओम चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकार ओंकार गम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिदेशकालाव्यवच्छेदनीयं त्रैवाक्यं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणास्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमुङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकैन्दुकोटिप्रभापूरतुल्याद्युतिं दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावतात प्रसन्नं सदानन्दसंवेदस्वरूपं शुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्त्रिग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलाम्रष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं अलिव्याकुलाम्बोधिमन्दारमालं महोदे स्फुरत्कौस्तुभोदारहारं शुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिः चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रैः दारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं सदद्वन्द्वनिरधूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वा दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रितासात्कुम्भद्युतिस्नग्धकान्त्या धरण्या चतुर्बादलश्यामलाङ्गया कलत्राद्वयेनामुनातु सीताय त्रिलोकीग्रहस्थाय विष्णु नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गो वयस्यं धनं साध्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हाजीवतु मे वशामातिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवशीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासिताभ्यं कफव्याहतोष्णोर्वणाश्वासवेग यथा विस्फुरत्स
सर्वमरमास्ति बन्धा विचिन्त्या हेमन्त्याम सख्यामवस्था विभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नाच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथा नो स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गा प्रयान्तं पठेद्यास्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समूहं विहायासु युष्मात् प्रसादा समाश्रितयुगं व्रजत्याच्युतं त्वाम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमत्शङ्कर भगवतः कृतौ विष्णुभुजङ्ग प्रयाति स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारं ओङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिदेशकालाव्यवच्छेदनीयं त्रैवाक्यं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणास्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमुङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकैन्दुकोटि प्रभापूरतुल्याद्युतिं दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावतात प्रसन्नं सदानन्द संवेद स्वरूपं शुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्त्रिग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलाम्रष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं अलिव्याकुलामोदिमन्दारमालं महोदे स्फुरत्कौस्तुभोदारहारं शुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिः चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रैदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं सदद्वन्द्वनिरधूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वा दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रितासात्कुम्भद्युतिस्नग्धकान्त्या धरण्या चतुर्बादलश्यामलाङ्गया कलत्राद्वयेनामुनातु सीताय त्रिलोकीग्रहस्थाय विष्णु नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गो वयस्यं धनं सद्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हाजीवतु मे वशामातिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवशीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासिताभ्यं कफभ्याहतोष्णो
बणाश्वास वेग व्यथा विस्फुरत् सर्वमरमास्ति बन्धा विचिन्त्याहमन्त्याम सख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नाच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथा नो स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गा प्रयान्तं पठेद्यास्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायासु युष्मात् प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजत्याच्युतं त्वाम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमत्शंकर भगवतः कृतौ विष्णुभुजंग प्रयाति स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकार ओंकार गम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अदिग्देशकालाव्यवच्छेदनीयं त्रैवाक्यं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणास्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमुङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकैन्दुकोटि प्रभापूरतुल्याद्युतिं दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवेद स्वरूपं शुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्त्रिग्धकेशं स्फुरत् पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्न प्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलाम्रष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोदिमन्दारमालं महोदे स्फुरत्कौस्तुभोदारहारं शुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिः चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रैदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं सदद्वन्द्वनिरधूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वा दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रितासात्कुम्भद्युतिस्नग्धकान्त्या धरण्या च दुर्बादलश्यामलाङ्गया कलत्राद्वयेनामुना तुसिताय त्रिलोकीग्रहस्थाय विष्णु नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गो वयस्यं धनं साध्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हाजीवतु मे वशामातिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवशीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासिताभ्यं कफभ्याहतोष्णो
बलाश्वासवेग यथा विस्फुरत् सर्वमरमास्ति बन्धाम् विचिन्त्याह्यमन्त्याम सख्यामवस्थाम् बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद पन्नाच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथा नो स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गा प्रयान्तं पठेद्यास्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समूहं विहायासु युष्मात् प्रसादा समाश्रितयुगं व्रजत्याच्युतं त्वाम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमत्शङ्कर भगवतः कृतौ विष्णुभुजङ्ग प्रयाति स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अदिग्देशकालाव्यवच्छेदनीयं त्रैवाक्यं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणास्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमुङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकैन्दुकोटि प्रभापूरतुल्याद्युतिं दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावतात प्रसन्नं सदानन्द संवेद स्वरूपं शुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्त्रिग्धकेशं स्फुरत् पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलाम्रष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोदिमन्दारमालं महोदे स्फुरत्कौस्तुभोदारहारं शुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिः चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रैदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं सदद्वन्द्वनिरधूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वः दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रितासात्कुम्भद्युतिस्नग्धकान्त्या धरण्या चतुर्बादलश्यामलाङ्गया कलत्राद्वयेनामुनातु सीताय विलोकीग्रहस्थाय विष्णु नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्ग वयस्यं धनं साध्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हाजीवतु मे वशामातिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवशीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्या
कदापि हन्त त्वयोदासिताभ्यं कफव्याहतोष्णूर्बणाश्वासवेग यथा वेत्पुरत् सर्वमरमास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्याम सख्यामवस्थां विभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नाच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथा नो स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गा प्रयान्तं पठेद्यास्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायासु युष्मात् प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजत्याच्युतं त्वाम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमत्शंकर भगवतः कृतौ विष्णुभुजंग प्रयाति स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारं ओंकारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अदिग्देशकालाव्यवच्छेदनीयं त्रैवाक्यं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणास्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमुङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकैन्दुकोटिप्रभापूरतुल्याद्युतिं दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवेद स्वरूपं शुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्त्रिग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलाम्रष्टगण्डास्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोदिमन्दारमालं महोदे स्फुरत्कौस्तुभोदारहारं शुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिः चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रैदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं सदद्वन्द्वनिरधूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वा दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रितासात्कुम्भद्युतिस्नग्धकान्त्या धरण्या चतुर्बादलश्यामलाङ्गया कलत्राद्वयेनामुनातु सीताय त्रिलोकीग्रहस्थाय विष्णु नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्ग वयस्यं धनं सद्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हाजीवतु मे वशामातिरक्तं च मांसं बलं च अहो देव शीदामि दीनानुकम्पिन् हिमद्या
विद्यापि हन्त त्वयोदासिताभ्यं कफव्याहतोष्णुर्बलाश्वासवेग यथा वेत्पुरः सर्वमरमास्ति बन्धां विचिन्त्याहमन्त्याम सख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद प्रपन्नाच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथा नो स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गा प्रयान्तं वठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायासु युष्मात् प्रसादात् समाश्रित्य युगं व्रजत्याच्युतं त्वाम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमत्शङ्कर भगवतः कृतौ विष्णुभुजङ्ग प्रयाति स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अदिग्देशकालाव्यवच्छेदनीयं त्रैवाक्यं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणास्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमुङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकैन्दुकोटि प्रभापूरतुल्याद्युतिं दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवेद स्वरूपं शुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्त्रिग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलाम्रष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासम् अलिव्याकुलामोदिमन्दारमालं महोदे स्फुरत्कौस्तुभोदारहारं शुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिः चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रैदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं सदद्वन्द्वनिरधूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वा दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रितासात्कुम्भद्युतिस्नग्धकान्त्या धरण्या चतुर्बादलश्यामलाङ्गया कलत्राद्वयेनामुना तु सीताय विलोकीग्रहस्थाय विष्णु नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्ग वयस्यं धनं साध्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हाजीवतु मे वशामातिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवशीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासिताभ्यं कफव्याहतोष्णुर्बलाश्वासवेगो
बलाश्वास वेग व्यथा वेत्पुरत् सर्वमरमास्ति बन्धाम् विचिन्त्याह मन्त्याम सख्यामवस्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नाच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथा नो स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गा प्रयान्तं पठेद्यास्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समूहं विहायासु युष्मात् प्रसादात् समाश्रितयुगं व्रजत्याच्युतं त्वाम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमत्शङ्कर भगवतः कृतौ विष्णुभुजङ्ग प्रयाति स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारं ओङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अधिदेशकालाव्यवच्छेदनीयं त्रैवाक्यं वेद तस्मै नमस्ते महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणास्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमुङ्कर्णिकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकैन्दुकोटि प्रभापूरतुल्याद्युतिं दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात प्रसन्नं सदानन्द संवेद स्वरूपं शुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्त्रिग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलाम्रष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं अलिव्याकुलामोदिमन्दारमालं महोदे स्फुरत्कौस्तुभोदारहारं शुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डै चतुर्भिः चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रैदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं सदद्वन्द्वनिरधूतपदमाभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियास्वा दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते श्रितासात्कुम्भद्युतिस्नग्धकान्त्या धरण्या चतुरबादलश्यामलाङ्गया कलत्राद्वयेनामुना तुसिताय त्रिलोकीग्रहस्थाय विष्णु नमस्ते शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गो वयस्यं धनं सद्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हाजीवतु मे वशामातिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवशीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासिताभ्यं कफभ्याहतोष्णोर्बलाश्वासवेग व्यथा वेत्पुरत् सर्वमरमास्ति बन्धाम् विचिन्त्याह मन्त्याम सख्यामवस्थां बिभेमि
प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नाच्युतानन्त गोविन्द विष्णु मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथा नो स्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं तथा मे दयाशील देव प्रसीद भुजङ्गा प्रयान्तं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायासु युष्मात् प्रसादात् समाश्रित्य युगं व्रजत्याच्युतं त्वाम् इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमत्शङ्कर भगवतः कृतौ विष्णुभुजङ्ग प्रयाति स्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ विष्णवे नमः।